Hello, bachcho, and welcome once again to the series of clinical anatomy. We have started with upper limb case discussion. है ना, अपर लिम केस डिस्कशन हमने ऑलरेडी शुरू किया है. केस 1 and 2 हमने डिस्कस किया है. नाउ लेट अस गो टू केस नंबर 3. स्टूडेंट्स, अगर आप ये कंप्लीट सीरीज देखते हो तो यू गेट अ कंप्लीट कोरिलेशन ऑफ द क्वेश्चंस, a complete idea of the questions which can be asked in the exams. The clinical case discussion जो exams में पूछेंगे, you'll get a complete idea. तो make it a point to see this series without fail. ठीक है, एंड पूरा सीरीज देख लो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से. ठीक है, तो कमिंग टू द थर्ड केस डिस्कशन, have a look at this. A 30 years old falls while holding onto a branch overhead. मतलब a 30 years old person climbed a tree, maybe he must be removing some fruits वगैरह ऐसे निकालता होगा, and suddenly he falls down. ठीक है, he falls down, and as he is falling down he holds some other branch, एक दूसरा branch पकड़ लेता है. So the arm is hyper abducted. This is called as hyper abduction injury. Hyper abduction. ठीक है, the arm is suddenly hyper abducted. मतलब a person is falling down from a height and suddenly कुछ मिल गया, वो person holds that thing, so the arm is hyper abducted. जब hyper abduction होता है, so which trunk of the brachial plexus is involved? Any guesses? जब hyper abduction injuries होता है, a person is skiing like in the ice, skiing करते हैं ना, skiing, and suddenly he holds a pole and जोर से jerk बैठता है, जोर से jerk बैठता है. So these are hyper abduction injuries. Hyper abduction injuries can occur during birth also. Birth के समय भी होते हैं, और during injuries, traumas ऐसे. So he developed weakness of intrinsic muscles and numbness along the medial aspect of the forearm and hand. So localize the lesion. बच्चों क्या लगता है? What do you think? Whenever a person is falling down from a height and holds an object, he gets a hyperabduction injury. Which trunk of the brachial plexus is involved? Which trunk? It's the lower trunk of the brachial plexus. Lower trunk of the brachial plexus का involvement होता है यहाँ पे, right? I mean the lower trunk of the brachial plexus कैसे बनता है? This is C5, C6, C7, C8 and T1. So what are these? These are the roots. C5, C6 से बना upper trunk, that's a middle trunk, that's a lower trunk. Okay, that's a upper trunk, that's a middle trunk, that's a lower trunk of the brachial plexus. Then the trunks will divide into a dorsal and ventral divisions. So this is dorsal, 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 and ये मैं draw कर रहा हूँ ventral, ventral and ventral divisions, right? So the ventral division of upper and middle trunk से क्या बना? Lateral cord. The ventral division of lower trunk से क्या बना? Medial cord, medial cord, and the dorsal division of all the three trunks joins to form what? That's a posterior cord. Posterior cord. Fine. So roots, trunks, division, cords, and finally क्या होता है? Nerves or the branches. These are the parts of the brachial plexus. ये आपको पता है? Roots, trunks, division, cords, and finally we have the nerves. Fine. So hyperabduction injury में which trunk of the brachial plexus is involved? The lower trunk of the brachial plexus involvement होता है. And which are the roots involved? That's C8 and T1. C8 and T1 roots involvement होता है. And this C8 and T1 roots are present mainly in two nerves. ये दो nerves में main इसका involvement होता है. One is the median nerve, and the other one is the ulnar nerve. Median nerve and ulnar nerve. So C8 and T1 maximum concentration कौन से nerves में है? Median nerve and ulnar nerve. And this C8 and T1 roots mainly supply the small muscles in the hand, intrinsic muscles of the hand. Fine. So median nerve कितने muscles supply करती है hand में? 5 muscles. And ulnar nerve supplies how many muscles in the hand? 15 muscles. Exact. बराबर है, 15 muscles in the hand. Median nerve supplies 5 muscles. So paralysis of all these muscles, these are the intrinsic muscles of the hand. ठीक है, in Klumpke's paralysis. ये paralysis का नाम क्या है? Klumpke's paralysis. Involvement of the lower trunk of the brachial plexus, Klumpke's paralysis. Nerve roots involved C8, T1. The
trunk involved, lower trunk. C8 T1 is mainly present in median and ulnar nerves, and this C8 and T1 mainly supplies the intrinsic muscles of the hand. इसमें lumbricals का भी involvement हो जाता है. Lumbricals are also involved. So because of the paralysis of lumbricals, we get a claw hand, a complete claw hand. समझ में आ रहा है? So complete claw hand मिलेगा. अगर only median nerve is injured, you'll get a claw hand of 2 digits because the first 2 lumbricals are supplied by median nerve. The third and the fourth lumbricals are supplied by ulnar nerve. अगर ulnar nerve injury होती है तो medial 2 digits मतलब ring finger and little finger का क्लॉ हैंड होता है. अगर मीडियन नर्व इंजरी हुआ तो इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर का क्लॉ हैंड होता है. बट अगर C8 एंड T1 दोनों इन्वॉल्वमेंट है सो यू गेट अ कंप्लीट क्लॉ हैंड. इसे हम बोलेंगे कंप्लीट क्लॉ हैंड. बच्चों समझ में आ रहा है? सो आपको क्या याद रखना है? एनी टाइप ऑफ क्लिनिकल क्वेश्चन जिसमें हाइपर एब्डक्शन इंजुरीज दिए हैं, हाइपर एब्डक्शन इंजुरीज. So which trunk? Lower trunk. Roots C8T1 and C8T1 present mainly in median ulnar nerves. What do they supply? The intrinsic muscles of the hand. So what are we going to get over a period of time? Claw hand, claw hand. So localize the lesion, the lower trunk. 2 nerves which are implicated, median and ulnar nerve. What deformity does appear? What is that? Claw hand. That's claw hand, claw hand. Fine. Is this clear? A complete claw hand with जो भी एडिशनल फीचर्स हैं. जब मीडियन नर्व इंजरी होती है तो क्या होती है एंड अल्नर नर्व इंजरी होती है तो क्या होता है. फाइन. एंड विच एडिशनल ऑटोनोमिक साइन में ऑकर एंड व्हाई? ऑटोनोमिक साइन, एनी गेसेस? T1 स्पाइनल नर्व में क्या होता है? T1 स्पाइनल नर्व में सिंपैथेटिक फाइबर्स होता है. सिंपैथेटिक फाइबर्स, आई जस्ट मेंशन दिस फॉर यू. लुक, जो sympathetic outflow is thoracolumbar. thoracolumbar and outflow मतलब ये कहां से बिगिन होता है? T1 to L2 segments of the spinal cord. T1 to L2 segments of the spinal cord. So T1 to L2, fine. So ये जो T1 segment है ना, T1 segment, यहाँ से what begins from here? What from T1 to L2 segments of the spinal cord? What begins? What begins is the preganglionic fibers of sympathetic nervous system. Preganglionic fibers of sympathetic nervous system. So this preganglionic fibers of sympathetic nervous system are present in T1 to L2 spinal nerves. तो क्लम्कीज पैरालिसिस में who's involved? T1 है ना, C8 and T1. तो T1 का इन्वॉल्वमेंट है. So sympathetic fibers are involved, and because of the involvement of sympathetic fibers, what do we get? Horner's syndrome. What do we get? Horner's syndrome. Horner's syndrome is seen in Klumpke's paralysis. This is due to involvement of the sympathetic fibers. ठीक है बच्चों. And Horner's syndrome is a group. 4 उसमें lesions होता है. One is ptosis, drooping of the eyelid, and hydrosis. And hydrosis is loss of sweating. Ptosis and hydrosis. Meiosis is constriction of pupil. Ptosis, meiosis, and hydrosis. Okay, fine. So that's about the Horner's syndrome. ये याद रखना Horner's syndrome के बारे में. So clear बच्चों? ये clear है आपको? Fine. Enophthalmos है वो चौथा, enophthalmos. Fine. So this is clear. Localize the lesion. Lower trunk of the brachial plexus. दो terminal nerves कौन है? Median and ulnar nerve. Deformity is claw hand. That is what is expected. What additional autonomic sign में occur and why? तो इसमें मिलेगा Horner's syndrome. And why? Because of the involvement of cervical sympathetics. And ये same चीजें है ना, autonomic involvement, ये same चीजें कहाँ पे मिलते हैं? Pancoast tumor में भी similar finding होता है. That's a tumor of the apex of the lung. That is known as Pancoast tumor. तो उसमें भी ये clinical finding मिलता है. Fine students, clear? Erb's paralysis क्या था? Injury to the upper trunk of the brachial plexus. हाँ, इसमें क्या होता है? The neck is separated from the shoulder. ऐसे during accidents या birth injuries में Erb's paralysis होता है. Which trunk is involved? Upper trunk. Which roots are involved in Erb's paralysis? C5, C6.
एंड C5 C6 which nerves carry दो main nerves पूछेंगे तो musculocutaneous and axillary. Klumpke's paralysis, lower trunk, C8T1, दो nerves involvement, median and ulnar nerve, right? Median and ulnar nerve. Clear to all of you? Is this clear? हाँ, तो ये है क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब ये देखो, हॉर्नर सिंड्रोम मोस्टली सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ. अभी आपको पता है व्हाट इज हॉर्नर सिंड्रोम. हॉर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय लीजन ऑफ, मतलब इंजरी टू द सर्वाइकल सिंपैथेटिक. सर्वाइकल सिंपैथेटिक इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है? हॉर्नर सिंड्रोम होता है. एंड क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए. यू आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स. So Horner syndrome is seen in lesion of what? So Horner syndrome is a group of 4: anhidrosis, ptosis, meiosis, and enophthalmos. ठीक है? So that's Horner syndrome. Sorry. Students, I hope this is clear to all of you. So thank you so much. And you can follow my Telegram page. That's my Instagram handle and the YouTube. ठीक है बच्चों, तो हमने ये सीरीज ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमी शुरू किया है. आई हैव नाउ इन दिस स्टार्टेड विथ अपर लिम्ब. वैसे हम लोअर लिम्ब भी करेंगे. बहुत बच्चों की इंक्वायरी थी फॉर द क्लिनिकल केस डिस्कशन. तो एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट. हाँ, एंड क्लिनिकल केस का हमेशा एक स्टेम होगा, अ क्वेश्चन होगा, एंड देयर विल बी 3-4 सब क्वेश्चंस. राइट, इट इज फॉर 5 मार्क्स. तो 3-4 या 4 या 5 सब क्वेश्चंस होंगे. यू हैव टू जस्ट आंसर टू द सब क्वेश्चंस. फाइन. मतलब वी जस्ट हैव टू have an implication of clinical anatomy with the normal anatomy that we study. ठीक है बच्चों, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच एंड देखते रहिए द नेक्स्ट लेक्चर of the series of clinical anatomy. Okay, thank you.